Okay, so the 5 minute time frame seems like having a small break on the Anchor VWAP, but however, like 1 minute and 3 minute are still trading above the same. So there's a possibility that we might see a green candle forming in here on the 5 minute time frame to nullifying this effect of the previous candle which has formed. So for now, like I said, the risk is 2 rupees per share. So if I'm like willing to risk like around about 10,000 rupees on this trade, then I would like initially buy only 25 unit quantity, right? Because that would be like 5,000 rupees risk, and I would wait for a confirmation to form on this anchor VWAP, like have a green candle here at least, right? थोड़ा सा confirmation मिले, then we can progress to add some more quantity, right? टच पे खरीदना इज गुड, नो डाउट, लेकिन टच पे खरीदना और उसके बाद आफ्टर गेटिंग अ कंफर्मेशन एडिंग मोर इज एन एक्सेलेंट थिंग टू डू. So right, let's just wait and see if it can form a confirmation here, or will the follow-up selling return and the trend gets negated. Let's see क्या होता है. Okay, so 1 minute पर तो ऐसा लग रहा है कि it is taking the support, क्योंकि ये वाला एंकर भी आपका लेवल था और यहाँ पे टच आया और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है, राइट? सो 1 minute हैज ड्यूली रिस्पेक्टेड. नाउ इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ 3 minute इज प्लेइंग इट्स रोल, राइट? एंड अगर 1 और 3 पे प्ले आउट हो गया तो 5 पे तो इट विल ऑटोमेटिकली टर्न इनटू अ ग्रीन बार देन, राइट? सो लेट्स सी कैसा प्ले आउट होता है. Okay, 3 minute candle still has like around about 2 minutes into candle closing, so I think we should have a good clarity on the front कि 11 बजे तक अपने को क्लैरिटी मिल जाएगी that either this anchor VWAPs are supporting or not, and then accordingly we'll have a further look at it. So let's see अभी तक कितने uh, एक सेकंड. Okay, so just 45 seconds into the candle closing. Let's see. Like I said, this should ideally be a green bar, and if it is not turning out to be a green bar and it's moving below the prices, then it won't be a good signal. So अभी देखते हैं क्या 31 seconds are still there.
Okay, just give me this green bar, then I'll move my stop loss a bit. Okay, seems like good enough to move my stop loss for a bit. And how much is it? 1.33. Okay, so 86.7 is like perfect, I feel. Yeah. For now, it does not seem like the need to move any stop losses. 3 minute per B, this is like kind of trading around about there only. And on 15 minute, it might have had a rejection below these prices, right? Yeah. So okay, it looks fine only for the time being. Let's just hold on to our trade for uh, another 15 minutes and then see how the price is behaving. तो ऊपर से क्या हुआ है यहाँ पे सेलिंग आई है राइट फ्रॉम 91.55 ऑड लेवल्स टू द प्राइस ऑफ ड्रिफ्टेड टिल 88. तो यहाँ पे जो सेलर्स ने अपना पोजीशन बनाया है दे आर करेंटली होल्डिंग देम एट 89.6. सो वी विल केयरफुली ऑब्जर्व कि ये 89.6 तक आगे कैसा बिहेव कर रहा है राइट. ये एक बार मैं तीनों लाइफ फ्रेम पे प्लॉट कर लेता हूँ. देखो यार प्राइस को तो ऊपर आना ही है एक बार क्योंकि उसने नीचे जो मॉर्निंग बायर्स थे वो है पुश द प्राइस फ्रॉम 82 टू 92, 82 टू 91.55 राइट. ये जो 10 रुपए का पुश दिया है उन्होंने दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस स्ट्रेंथ. इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस सेलर इज डिफेंडिंग राइट. थोड़ा आई थिंक चार्ट पे showing ज़्यादा हो गया so let me just take the unnecessary things off the screen so that we can have a clean and clear chart. ओके सो नाउ व्हाट वी विल सी इज देखो यार दो चीज़ें हुई है यहाँ पे. मैं ना एक काम करता हूँ आपको 1 मिनट पे ही समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगा. यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं. यहाँ पे क्या हुआ है दैट द प्राइस गॉट लिस्टेड एट 82. फ्रॉम 82 द स्टॉक वेंट टिल 91.55 एंड फ्रॉम 91.55 द स्टॉक केम डाउन टिल 88. ठीक है बस यही तीन चीज़ें हुई हैं. अब हुआ क्या है जो 82 से 91.55 का पुश मिला था that buyer has his anchor VWAP at this green line which you are seeing. Okay, this green line which you are seeing, this is the buyer's anchor, and this red line which you are seeing, which is right here, this is the seller's anchor. Right, not red. Let's just call it blue only. Okay, so this blue line is the seller's anchor. 91.55 से 88 जिसने पुश किया है उसका एंकर इज एट 89.45. 82 से 92 जिसने पुश किया है उसका एंकर इज एट 88.15. अब क्या होता है जनरली प्राइस है ना इन दो रेंज के बीच में थोड़ा फंस जाता है राइट. अगर ये वाली जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट कर जाता है देन इट्स अ पॉजिटिव साइन. हाउएवर इफ द प्राइस इज स्टार्टिंग टू चॉप बिटवीन द रेंज तो वो एक तरफ निकलता है. आइदर इट इज लाइक ऑन द अपसाइड मैसिवली और ऑन द डाउनसाइड ट्रिगरिंग अ स्टॉप लॉस. So for the time being, it is just best to be patient, wait and watch, and see how the price is playing out. Our stop loss is anyway kept at 86.7, and our risk is managed, right? So risk तो manage हो रखा है 2 रुपए per share से. Also regarding targets, if you would talk like on the target front, तो क्या हुआ यार देखो 91.55 तक गया, 88 का लो बनाया. So this range, which is like around about 3.55, यही range ऊपर की तरफ target हो जाएगी. This target would be at 95. So ideal target is like coming at 95. 95 is the target. यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं कि अपना टारगेट क्या है ताकि रिस्क रिवॉर्ड लोग दे कैन सी. 95 is a target, so this is like 6.4 points per share is our reward. Right, so the risk reward ratio is how much? RR ratio is 3.2. Yeah, let's see कैसा रहता है.
Okay, there comes a touch at the seller's anchor. It should be interesting to see if the seller is getting eliminated or not. अगर ये वाला seller एक बार eliminate हो गया ना, then there won't be any difficulty for the buyers to push the prices up. Okay, 89.85. Just take out that 90 level. I think 90 is like around about 6 lakh shares order. So yeah, they were listing day पे ना volumes are massive. 14 crore share have been traded in just 1 hour. ओके तो 1 मिनट पे तो सेलर ने कंफर्म बायर ने कंफर्मेशन दे दिया है अबाउट दिस एलिमिनेशन व्हिच हैज हैपेंड राइट हियर सिमिलरली ऑन द 3 मिनट एज वेल however 5 minute is still awaited for like around about 3 minutes देखते हैं एक बार 90 टेक आउट हो जाए बस 89.80 89.90 and 90 is being taken out. Okay, that is a good signal, I must say. Yeah, so we have at 90.25 now. So this is looking quite positive. See, देखो यार जैसे हमने wait किया आराम से, we waited for our setup to form and we took our entry at 88.6 like I said, and now we are just patiently waiting for this seller which has been eliminated. I feel अब ये तो काफी positive price action दिख रहा है मेरे को, and I feel it should ideally take above 91.55 in some time. तो एक बार 91.55 आ जाता है. अब देखो यार यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है. 91.55 minus 88.6 is how much? 3 rupees, right? So we do a few things here. यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व की है ये चीज़ कि जब भी जो अपना recent हाई होता है, so the recent high is at 91.55. Once that recent high comes, observe the price action there and take a call. ठीक है, तो वहाँ पे अपने को थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है कि यार वहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है. इफ द प्राइस इज स्टार्टिंग टू फेस रेजिस्टेंस देयर, देन इट्स अ गुड पॉइंट टू जस्ट स्केल आउट सम शेयर्स. थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए वहाँ पे. एंड देन इफ द प्राइस इज टेकिंग अबव दैट लेवल, देन यू कैन वेरी वेल वेट टिल 95, राइट. तो 90.40 अभी हो चुका है. ओवरऑल हाउ इज द एंकर वीवैप पुशिंग? एंकर वीवैप में पुश नहीं आ रहा है, ये चीज़ मेरे को थोड़ा सूट नहीं कर रहा है 88.30 35 पे अभी. But either ways, I'm still holding on to the position. $91 point. That's for how much? 90.75. Okay, anyway, I'm still waiting. ओके तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे 5 मिनट पे भी मोस्ट लाइकली अपने को कंफर्मेशन मिल ही जाएगा कि ये जो सेलर जिसने 91.55 से प्राइस को 88 तक लाया था, द सेलर हैज बीन एलिमिनेटेड राइट हियर. So once the seller is eliminated, the buyer should ideally hold his strength, which he has done so far, and should be interesting to see how it goes forward. 15 मिनट पे भी परफेक्ट सपोर्ट लिया है, तो नो नीड टू वरी. अगले 5 मिनट एक बार और देख लेते हैं 11:15 तक क्या चलता है. ओके 5 मिनट पे भी सेलर एलिमिनेट हो चुका है. अब बस 15 मिनट पे एक बार चेक करना बाकी है, विच इज लाइक 5 मिनट्स मोर इनटू द कैंडल क्लोज. एक बार देख लेते हैं 5 मिनट के लिए. एंड जो हाइज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, दे आर around 90.75 and 91.55. These are marking just for my own reference, nothing to do with you guys.
so don't worry about it. Okay, just one second. Okay, the seller eliminate हो चुका है. 5 minutes more into this candle closing. Yeah. Okay, 2 more minutes. Okay, 90.70, 90.90. That is going for 91 now. 91 is also being taken out. 91.40. Let's see if 91.55 can take out or not. यार ये एंकर वीवैप पे पुश नहीं आ रहा है, so this is not giving me good conviction. So what I'm doing here is I'm booking some profits. I am booking some profits at 91.40. So I am booking 50% profits at 91.40 here. Just writing it for everyone's reference. Booking 91.40, 50%. Okay, so I have booked 50% profits at 91.40. Okay, 92, 92.25. That seems like a good move now. ठीक है, कोई बात नहीं यार, 50% प्रॉफिट बुक हो गया तो क्या बात है, 50% पोजीशन वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. ओके, दैट इज अ ब्यूटीफुल क्लोजिंग आई मस्ट से. ये जो 92.25 की क्लोजिंग आई है ना, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और मेरे को लगता है कि ये जो रेंज है जो ये बनी है ₹3.55, दिस शुड आइडियली कम इन. सो 95 शुड बी द आइडियल सेकंड टारगेट. लेट्स वेट फॉर 95.
Okay, 93.30. Wow. This is a very, very positive price action, I must say. 95 should ideally come in. So, if I'm booking 50% at 95 and I already sold at 91.40, my average will like come around about 93.20, and my entry was at 88.5, which is like around about 4.7. So, still a risk reward ratio of 2.5 if my target hits. So 2.5 is not a bad risk reward ratio at all for intraday trading. So let's wait for 95 to come in. 93.65. Wow, wonderful move. You must have seen that सुबह से हम patiently बैठे थे अपने trade के लिए, and we were just very very patiently observing and waiting for the setup to form. जैसे ही setup form हुआ, we executed it, and it has been a good trade so far. Let's just wait for 95 to come in, which is our second target by the way. 93.70. Wow. So this is like a classic example of how you manage your risk and just watch your rewards go in your favor. तो 2 रुपए का रिस्क था और अभी it's like trading at 93.70, which is like almost 5 points reward. Around about 2.5 RR आपका चल रहा है currently active, right? So this is how you manage your risk and you just ride your trades. ओके, सिंस मोस्ट ऑफ द क्लोजिंग्स एंड एवरीथिंग हैज बीन डन, तो अब हम एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं. देखो यार, ये सारी चीज़ें तो हो ही चुकी हैं. एक बार अगर आप चाहो तो ऑफ द करंट स्क्रीन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. लेट मी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड I'll share it on the group later on. So what I'm going to do is I'm just going to remove all these drawings just to explain you uh, the art of trailing stop loss going forward. अब stop loss को trail कैसे करना है, तो एक बार यार चौथी स्क्रीन पे मैं 15 मिनट भी लगा ही लेता हूँ. ओके, वेट वेट वेट.
So this is what has happened. एक बार let me have a price. Yeah. Okay. So now how do you trail your stop loss, right? Uh, for trading your stop loss, now what has happened is uh, यहाँ पे देखो यार, ये 5 मिनट वाले चार्ट पर फोकस करना, not this one. This 5 minute chart you have to focus. What has happened is कि 91.55 तक प्राइस गया था ऊपर. After that it came till 88, right? तो अब ये जो मॉर्निंग वाला बायर था ना, who has pushed the price from 82 to 91, he will no longer be of significance. ठीक है, अब इन दोनों का सिग्निफिकेंस है, ये जो 91.55 वाला है जो सेलर रहा है एंड दिस 88 वाला बायर, इन दोनों का सिग्निफिकेंस अब रहेगा मार्केट में. सो वन एंकर वीवैप विल बी ड्रॉन फ्रॉम 91.55 एंड वन एंकर वीवैप विल बी ड्रॉन फ्रॉम 88. ठीक है, तो एक बार हम ये दोनों लेवल पर एंकर वीवैप प्लॉट करके देखते हैं ऑन ऑल आर रेस्पेक्टिव टाइम फ्रेम, यहाँ से और यहाँ से. ये हो गया 1 मिनट के लिए, और ये हो गया 5 मिनट के लिए. This is for our 3 minute and this is for our 15 minute, right? So what we need to see is कि यहाँ पे lowest anchor VWAP current time पे कितना है, right? Across all the 4 time frames which we are seeing, the lowest anchor VWAP is coming at 90.35, right? So 90.35 is the lowest VWAP level across all the time frames right now, right? And to trail the stop loss, what we have to see is कि इन सब time frame में highest ATR अभी किस particular point पे चल रहा है. The highest ATR right now is running at the 5 minute time frame, which is 1.38 level. So my trailing stop loss will be 90.35 minus 1.38, which is at 88.95. So my trailing stop loss will be at 88.90. Just to give it a small buffer, 88.90 is my trailing stop loss at the time being. Right? And what was my second target? My second target was at 95. You know, ideally 95 का वेट कोई नहीं करता है, 94 90 तक ही बुक कर लेते हैं. 94 90 95 is considered to be the ideal target. Never wait for round numbers to come into picture. अगर आपका टारगेट 94.90 तक आ रहा है, then you just take out and book the profits. थोड़ी देर बात करो. Let me just make this a little bit bigger. Looks like the second target should also come in. Yeah, network issues. Okay, so 94.60 is almost into the picture, and like I said, ये 2 रुपये 55 पैसे की रेंज थी, 3 रुपये 55 पैसे की, which was still 95. थोड़ा सा 94.80 मिल जाए यार, 20 पैसे मोर. Okay, so anyway, it's almost like 11:30 right now. I think people might be starting to get bored as well. तो यहाँ पे एक काम करते हैं, we will conclude our session here, and just to give you a few updates. Update ये रहेगा अब कि यार देखो, trailing stop loss is at
88.90 currently, and the second target is at 95. तो अब क्या होगा यहाँ से अगर स्टॉक कभी भी पुल बैक करेगा, लाइक लेट्स से 94 से नीचे आ रहा है, देन इट शुड आइडियली फाइंड सपोर्ट बिटवीन दिस रेंज। ये वाले जो दो एंकर वीवैप मैंने प्लॉट किए हैं, one has been plotted from 91.55, second has been plotted from 88। तो ये जो दो एंकर वीवैप का ये वाला जो जोन है, इसमें द प्राइस शुड आइडियली फाइंड द सपोर्ट फ्रॉम एनी पुल बैक। अब ये जो दूसरा टारगेट है मेरा 95 का, once that target is being hit, I will book 25% more between 94.90 to 95, so between like 94.80 to 90 you can say, 80 to 90 के बीच में ही मैं इसको मोस्टली बुक कर लूँगा 25% more, and remaining 25% I will ट्रेल माई एस एल कंटिन्यूसली। यही वाले एंकर व्यू आप जैसे जैसे मेरे रिवाइज होते जाएंगे, आई विल कंटिन्यू टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस ऑन द रिमेनिंग 25% क्वांटिटी। With that, let's conclude on our today's session. I hope it was a wholesome experience learning for everyone. अगर किसी को भी कोई भी questions हैं जो आप पूछना चाहते हो after the session, then you can very connect well with me after the session. Also, जिन्होंने भी जियो मीटिंग्स पे नया साइन अप किया होगा, आई होप यू गॉट द फ्री पिज्जा थिंग एज वेल, जो लोगों को मैसेज में मिला होगा, आई होप। So anyway, jokes apart, have a really wonderful day ahead, and I hope it was a wholesome learning experience for everyone. Have an amazing day ahead. Chalo.